to my channel. I hope you all are safe and doing well. So for today's video, I will be sharing with you guys my top 30 picks for Nykaa's Hot Pink sale. So मैं आपको recommend करूंगी some of my favorite makeup products, then skin care, hair care as well as body care जो आपको definitely try करना चाहिए Nykaa की Hot Pink sale में, which is going to start from 22nd of July and it is going to be the hottest sale of the year because you will get up to 50% off in this sale. I know that's crazy discounts, right? Plus, you can download the Nykaa app and use the code FIRST300 to get a flat 300 rupees discount on your first order above rupees 1000. And here in this hot pink box are some of my top picks from the sale. So it has all the products that I've been loving so far and they're definitely value for money. So let me quickly open this box and share with you guys all the products that I want you to try from Nykaa's hot pink sale. So yeah, without any further ado, let's just get started with today's video. Alright, so let me start off with my makeup recommendations and then we'll move on to skin care, hair care and then body care. So makeup में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमर की. Now the two primers that I absolutely love, एक बहुत ही affordable है and एक थोड़ा सा महंगा है. So the most affordable and a very amazing primer that I have in my makeup collection is from Insight Cosmetics. It's their 3-in-1 primer. It primes, protects and moisturizes the skin. Now it's a silicone based primer, makes the skin super smooth and काफी अच्छे से pores को fill in कर लेता है. So this is something which I think you should definitely check out if you're a beginner, if you're just starting with makeup. So it's going to be a great option for you. Now another one is my most loved primer. I've been using this for I guess 3 years now. I love it. I've repurchased this a lot of times. So it's the Color Bar Perfect Match Primer. This is what it looks like. Again, a silicone based primer. ब्यूटिफुल प्राइमर. इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट होता है, एज एन बहुत अच्छे से बैठता है. सो मुझे ये वाला प्राइमर ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है. इफ यू कैन स्प्लर्ज अ लिटिल बिट मोर ऑन प्राइमर, please go for this one. You're gonna love this. Again, it fills in the pores and gives a really nice smooth base, as in a smooth canvas so that you can do your makeup. Both the primers are too good, definitely value for money. Now for the foundation recommendation, I have this one which is the Lakme Absolute 3D Cover Foundation with SPF 30. It has a beautiful high coverage and also it gives a matte finish. So if you have oily skin or combination skin, trust me, you're gonna love this foundation. थोड़ा सा ये ऑक्सीडाइज होता है. जब मैं इसको पहले लगाती हूँ ना, बहुत व्हाइट लगती हूँ मैं, मतलब अलग सा ही पता चलता है. बट देन आफ्टर सम टाइम मैं अपना जैसे मेकअप करती जाती हूँ, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड देन फुल फेस ऑफ मेकअप के बाद ना ये फाउंडेशन मेरे स्किन पे एकदम नॉर्मल लगता है. लाइक अभी भी मैंने इसको लगाया हुआ है. यू गाइस कैन सी के अब मेरे फेस पे काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, बट जब मैं इसको लगाती हूँ तो काफी व्हाइट लगती हूँ. बट ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद इट्स अ गुड मैच फॉर माई स्किन टोन. द शेड दैट आई हैव इज वार्म नेचुरल एंड आई थिंक द फॉर्मुलेशन इज रियली नाइस. इट्स नॉट very watery. It has sort of like a clay like texture if I'm not wrong. Now most of the products in this video are very affordable, as in under 500 or around 500. So we can just simply call this video under 500 or around 500. So now comes the concealer recommendations. I have two concealer recommendations. One is very affordable and one is a bit expensive. Now the affordable one is the Swiss Beauty Concealer. My shade is Claire Moine if I'm not wrong. It's called 06 Claire Moine. I don't know how to pronounce the name, but this, wow, it's like a beautiful concealer. मुझे as a brightening concealer ये यूज करना बहुत अच्छा लगता है एंड यू कैन से कि इतनी अच्छी कवरेज देता है, प्लस क्रीज व्रीज कुछ नहीं होता है जब मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर. सो अगर आपको बहुत अफोर्डेबल पर बहुत अच्छा कंसीलर चाहिए, प्लीज गो फॉर दिस वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन विच इज द LA Girl Pro Conceal. ये ट्यूब मेरी पूरी खत्म होने वाली है. I've used and abused this product so much. मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक दिस वाज माय third tube if I'm not wrong. My shade is medium beige. Now इसका formulation and इसकी coverage is something next level. Like I haven't seen इतना अच्छा concealer किसी और brand में, which is why I keep on going back to this one, the LA Girl Pro Conceal. I think this is something which you should definitely have in your makeup collection. Now I do have a beauty blender recommendation for you guys. Now for the longest time I have used Pack beauty blenders and it actually comes in a set of two. कुछ 700-800 rupees के आते हैं, but obviously I know not everyone wants to buy like a set of two. So for those of you जिनको नहीं खर्च करना है इतने ज्यादा पैसे, I have a very सस्ता टिकाऊ और बहुत ही अच्छा recommendation. This is from Color Bar and it's their Color Bar Sponge Beauty Sponge. I think यही नाम है.
सो ये कुछ मुझे 190-200 रुपीज़ के अराउंड पड़ा था एंड दिस इज क्वाइट स्क्विशी, वेरी वेरी नाइस एज इन टू ब्लेंड द फाउंडेशन एंड टू ब्लेंड द कंसीलर एज वेल। ना ये ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब नहीं करता है एंड अभी मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले डैम किया था एंड अभी तक ये वैसा उसी शेप में है। आई थिंक दिस इज a very good beauty blender under a budget. If you want to check out, you can definitely go for this one. Now to set the base makeup, I have a very amazing loose powder recommendation. अभी इतना ज़्यादा humid weather है, कितनी गर्मी पड़ रही है, so मैंने compacts use करना छोड़ ही दिए हैं, you can say. I'm only using loose powders and for the longest time I've used my Mars का trend setting powder, but I think ये वाला जो है ना K Beauty का HD, क्या है इसका नाम, HD सेटिंग लूज पाउडर, ये मेरा करंट फेवरेट है। दिस इज वेरी फाइनली मिल्ड, सेट्स द बेस सो ब्यूटिफुली। लाइक इसको मैंने यूज किया था एंड अभी तक कोई क्रीजेस व्रीजेस आना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, स्पेशली मेरी स्माइल लाइंस आ जाती हैं, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ मैं। सो आई लव टू यूज दिस लूज पाउडर। नाउ द शेड दैट आई यूज इज कॉल्ड बनाना, बिकॉज मैंने बनाना इसलिए लिया था बिकॉज आई थिंक कि ये हर स्किन टोन के साथ, लाइक मोस्टली हर स्किन टोन पे बनाना लूज पाउडर चला जाता है, although they have so many different shades available, but I think banana is such a versatile shade, so which is why I got this one. You should definitely check it out, especially if you have oily skin, you're gonna love this. And now comes the eyeshadow, and for that I have 3 recommendations. तीनों ही मेरी absolute favorite eyeshadow palettes हैं, and let's start off with the most affordable one, which is the ELF Bite Size palette. I got this recently. Love the formulation, the pigmentation. I mean, this is such a cute and value for money palette. Like this is पैसा वसूल. And I got the pumpkin pie because I think the shades that it has ना, आप इसको as an eyeshadow तो use कर ही सकते हो, but साथ के साथ you can use this warm tone brown as a bronzer and then this one like the cool tone brown as a contour shade. Then I have a colorful eyeshadow recommendation. It's Lakme Absolute Spotlight eyeshadow palette. Honestly, this was such a shocker for me because I wasn't expecting इतना अच्छा फॉर्मुलेशन एंड इतना अच्छा पिगमेंटेशन इन अ लैक्मे पैलेट. लाइक आई हैव यूज लैक्मे पैलेट्स अर्लियर, विच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट. एंड पहले वाला जो उनकी पैलेट्स मैंने जो यूज किए ना, उनकी पिगमेंटेशन वाज नॉट दैट ग्रेट, बट व्हेन लैक्मे केम अप विद दिस पैलेट आई वाज लाइक वाओ डूड, दे हैव चेंज्ड देयर गेम एंड दिस इज सच अ गुड पैलेट, लाइक कलरफुल पैलेट. सो वी हैव few matte shades over here, then we have a lot of shimmer shades over here. I think if you're a beginner, if you want to experiment with eye looks, this is such a beautiful palette because आप ऊपर मैट शेड अपने क्रीज में प्लेस कर सकते हो एज अ ट्रांजिशन शेड एंड देन उसी के मिलता जुलता जो शेड है नीचे, आप उसको लाइक शिमरी शेड को अपने लिड्स पे लगा सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. सो दिस पैलेट हैज माई हार्ट एंड आई यूज दिस पैलेट सो मच, स्पेशली इसका जो पर्पल शेड है ना, इट्स माई फेवरेट. एंड देन आई हैव अ हाई एंड ऑप्शन, इट्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी, इट्स देयर हेज पैलेट एंड आई जस्ट शो यू द शेड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ न्यूट्रल पैलेट. आई फील इतनी सुंदर न्यूट्रल पैलेट है. Like if you are into neutrals, please get this one because the formulation is very amazing and we have like warm tone browns, we have like a very dark brown, then a cool tone brown, we have very pretty shimmers as well, plus a very nude kind of pink color. I feel इसको भी ना आप multi-purpose use कर सकते हो. As in ये जो 2 shades हैं, आप इनसे bronzing contouring कर सकते हो, plus this shade right here, इससे आप अपना eyebrow fill in कर सकते हो. I have done that. अभी यहाँ पे ना जहाँ पे मेरे gaps हैं वहाँ पे मैंने इसको use किया है आज, and I think it just works beautifully as a eyebrow powder as well. ये hot pink sale में 50% off मिलने वाली है, which is why I thought कि क्यों ना मैं आपको recommend करूँ ये वाली if you are looking to buy a high-end palette at an amazing discount. Now comes the kajal recommendation and this is the only kajal that I have been using since months. I think अब तो 1 साल होने वाला है मुझे ये use करते हुए, मुझे इतना अच्छा लगता है. It's from K Beauty. The shade is called Spade. It's a jet black kajal, comes in a retractable packaging like this. I'm almost about to finish it. You guys can see. I feel it's a beautiful kajal. It's like jet black, beautiful formulation, and once it settles down, it becomes smudge proof. So I think कुछ 250 के around आता है and just get this. Like आँख बंद करके ले लो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. Now for mascara, I really want you guys to try this one from L'Oreal Paris. It's their Lash Paradise Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara. I think this is wow. I mean, I don't have words for this. Just look at my eyelashes. And I think let the eyes, let the mascara speak for itself. ये इतनी crazy volume देता है ना lashes को, like ऐसा लगता है मैंने falsies लगाई हुई हैं. Just like look at that.
इतना अच्छा वॉल्यूम, मतलब आई हैव यूज्ड माई फेवरेट लैश सेंसेशनल, फेसेस मैग्नेटाइज, बट आई थिंक समवेयर उन दोनों को ही ना इसने फेल कर दिया है. ठीक है, तो आप ये वाला तो डेफिनेटली चेकआउट करो बिकॉज I am 101% sure you're gonna be so happy with the results. The fuller effect that it gives to the lashes, it's just wow. Now for the bronzer and blush, I don't have like two separate products to recommend. Rather, I have this face palette that I really want to recommend you guys from Sugar Cosmetics. It's their Contour de Force face palette in the shade 02 Vivid Victory, and this is what it looks like. Love this so much, can't even tell you. Love the bronzer shade. This just goes really well on my skin tone, and then the highlighter is also very pretty, no doubt, but I do have like separate highlighter recommendations for this video, but I think you can equally consider my recommendation for this one as well. This is equally beautiful. Now for the blush, I am not into rosy pinky blushes, but somehow I just love this one. I think it's called Pink Pinnacle. If you don't want to buy the entire face palette, you can actually buy separate products, as in you can buy the blush separately, the bronzer and the highlighter separately. So it's a matte bronzer, and this blush is also a matte pink matte blush. I love the pigmentation of both the products. Like, you guys can see yourself. I think it just looks beautiful on my skin. And now comes the highlighter. I have two recommendations. Ye wala affordable hai as compared to this one. So this is basically K Beauty's Champagne Fizz. It's a beautiful highlighter. First of all, I really like the packaging of this. Comes with a huge mirror over here, and this is what the Champagne Fizz looks like. Iske shimmer particles are very fine. Like मोटे chunky particles नहीं है इसमें. जो इसके particles है बहुत fine है, जिसकी वजह से ना काफी सुंदर सा glow लगता है फेस पे. एंड जब से मैंने इसको परचेज किया है ना, मैंने बाकी सारे हाइलाइटर्स लगाना छोड़ दिए हैं. ट्रस्ट मी, आई रीच आउट टू दिस हाइलाइटर सो मच. मतलब मुझे ये बहुत पसंद है. द फॉर्मुलेशन इज सो ब्यूटिफुल. द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली अ हाई एंड हाइलाइटर. इट्स फ्रॉम Becca. इट्स देयर वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस Champagne Pop, and I got the mini wala packaging. And now I think what the hype is all about, why people rave about it so much, because this is a beautiful shade, and also this is like my first high-end highlighter, so it's gonna be so special for me as well. This is worth all the hype, and yeah, this is like a beautiful formulation. It's buttery smooth, and the shimmer particles are again very fine. But if you don't want to buy this, I'll tell you a dupe for this. So the Faces Canada इल्यूमिनेटिंग पाउडर, आई थिंक इट्स कॉल्ड, वो बहुत अच्छा ड्यूप है इसका. मैंने मिला के भी देखा था दोनों को स्वॉच करके, एंड हार्डली कोई फर्क पता चलता है दूर से. सो या, डेफिनेटली चेक आउट दिस वन इफ यू आर ओके विद स्पेंडिंग ऑन अ हाई एंड हाइलाइटर. एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट माई फेवरेट लिपस्टिक्स. आई हैव सो मेनी लिपस्टिक recommendations फॉर यू गाइज. मतलब हर टाइप का शेड. आई हैव अ ब्राउनिश न्यूड, अ पिंकिश न्यूड, pink color, it's like a fuchsia magenta color. Then I have a bright red color, and also a dark berry sort of a color. The first one is the Nykaa's So Creme Creamy Matte Lipstick in the shade Wake Up Makeup. I think this is a beautiful brownish nude. It's a creamy matte finish. You can see that the shade looks absolutely stunning. This is my current favorite nude lipstick. Really love the comfortable formula, and it's very affordable as well. Now I have a liquid lipstick. It's from Bellora Paris. It's like a beautiful pinky nude lipstick. I'll just show you a swatch. This is just beautiful. It's like a mixture of pink and peach. Like, this is so gorgeous. I love it. And इसको मैंने अपने हिमाचल व्लॉग में भी लगाया हुआ था, एंड yeah, it was looking very pretty on my skin tone. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. प्लस जब एक बार ड्राई आउट हो जाती है ना, it becomes very lightweight on the lips. Although ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकती है, but I think the formulation is not very drying. Plus it's very lightweight on the lips. So yeah, love the shade. I think it's just gonna look so beautiful on a lot of Indian skin tones. Then I have one fuchsia pink magenta kind of a lipstick. It's from Faces Canada. It's the No Transfer Matte Lipstick. Now this is again a very beautiful pink shade.
this is what it looks like. Again, a very very beautiful shade of pink. If you are into pink lipsticks, the formulation is a little bit drying, so make sure you moisturize your lips really well before applying this. Now I have two more lipsticks to share with you guys. This is a Maybelline's Superstay Matte Inks. I've talked about this a lot of times in my videos, in my previous videos. You guys know how much I love the lipstick, the formulation, the longevity. I mean, this is such a steal for the price it comes at. I think around कुछ 600 rupees के around आती है, and this is like a very bright red with orange undertones. It's like a nice mixture of orange and red. It's like the latest addition to my, you know, Superstay Matte Inks wala collection that I have, which is why I'm sharing this shade with you guys. It's called 25 Heroine. By the way, I forgot to tell you, it's very very pigmented. Like one swipe and you're good to go. बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहती है, एंड या थोड़ा सा ड्राइंग है, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल. एंड द लास्ट वन इज एक्चुअली माय फेवरेट डार्क लिपस्टिक शेड ऑफ ऑल टाइम्स. इट्स द NYX soft matte lip cream in the shade Budapest. This is a very beautiful color. Like, I can't even begin to tell you how much I love this, like plum berryish kind of a color. Very very beautiful and बहुत comfortable है lips पे. It's like a soft matte lip cream, so it's not drying at all. It's like a very good formulation. If you're not a big fan of those drying matte lipsticks, आप definitely lip creams try कर सकते हो, because ये थोड़ा सा matte effect देते हैं, साथ के साथ ना lips पे काफी comfortable होते हैं. Although ये उतने लंबे टाइम के लिए नहीं टिकते हैं जितने लंबे टाइम के लिए liquid lipsticks टिकती है हमारे lips पे. But I think if you want like a comfortable formulation for your lips, definitely go for this one. The shade, the Budapest shade, I absolutely love it. I think it just looks so badass and so sexy on my skin tone. And now we're left with setting sprays in the makeup category. I have two options for you guys. Now this is quite an affordable one, and this is quite an expensive one. Let me just start off with this one. It's the Faces Canada All-Time Pro Makeup Fixer. Love the beautiful dewy finish that it gives. काफी अच्छे से हमारे मेकअप को ना काफी लंबे टाइम तक सेट करके रखता है. And like I said, the dewy finish is everything. बहुत अच्छी ड्यूई फिनिश देता है, एंड ऑल्सो काफी ज्यादा लाइक हाइड्रेटिंग भी फील होता है स्किन पे. सो मुझे तो ये पर्सनली यूज करना बहुत अच्छा लगता है. नाउ द सेकंड वन इज, ओ माय गॉड, आई वाज आइंग ऑन दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड आई फाइनली गॉट माय हैंड्स ऑन दिस वन. मैंने बहुत लोगों को देखा है इसके बारे में बात करते हुए. पीपल रेव अबाउट इट सो मच, एंड नाउ आई नो कि क्यों लोग इतना पागल है इसके पीछे, बिकॉज ये प्रोडक्ट ही कमाल का है. सो इट्स द मैक फिक्स प्लस, एंड इसको आप काफी सारे वेज में यूज कर सकते हो. एज अ मेकअप फिक्सर तो यूज कर ही सकते हो, बट अगर आपको अपना स्किन प्रेप करना है मेकअप से पहले तो आप तभी कर सकते हो. अगर आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प करना है, एज सून एज आई यूज्ड इट, आई वाज लाइक वाओ, इसको मैंने आज भी यूज किया हुआ है, एंड इट जस्ट गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्लोई ड्यूई फिनिश. लाइक दैट फिनिश इज everything I need. So this is actually the full size, but if you don't wanna, you know, try the full size, you can get the mini version as well. If you like the mini version, then you can think of investing in the fuller size, and I'm pretty sure it's gonna become my forever favorite. You will see me recommending this so many times in my future videos. And we are done with the makeup recommendations. Now let me just start off with some skincare. So I really want you guys to try this Simple का hydrating light moisturizer. This is my most used moisturizer in my skincare stash. मैंने इसको महीनों यूज करा है. अभी तो right now I'm using my Nutriderm का vitamin E moisturizing lotion, but I do reach out to this one so many times I can't even tell you. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. It's very lightweight, and इसका जो formulation है ना, again it is not very thick or greasy. So अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, आप तब भी ये यूज कर सकते हो. इट्स वेरी लाइट वेट, बट ये बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है एंड स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट कर देता है. नेक्स्ट अप, आई हैव बीन यूजिंग दिस कामा आयुर्वेदा's न्यूली लॉन्च्ड प्योर निरोली वाटर. आई हैव द बड़ा वाला बॉटल, बट ये 50 ml वाली पैकेजिंग में भी आता है. दिस वन इज 200 ml. ना ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, एंड इससे पहले आई यूज्ड टू यूज द रोज वाटर फ्रॉम कामा आयुर्वेदा. आई लव इट सो मच, बट मैंने कुछ दिनों से वो छोड़ दिया लगाना, एंड मैं इसको एज अ टोनर यूज कर रही हूँ, प्योर निरोली वाटर को. एंड ओ माई गॉड, दिस इज सो रिफ्रेशिंग. इसको मैं एक्चुअली अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, एंड वो जो ठंडा स्प्रिट्स करती हूँ ना अपने फेस पे, ट्रस्ट मी गाइज, इन दिस वेदर इट इज सो
nice. It just feels so refreshing and hydrating as well. If you are into facial mist, please ये वाला try करके जरूर देखना. It's actually face and body mist. It just smells heavenly. इसको स्प्रिट्स करते ना ऐसा लगता है दुनिया की सारी तकलीफें दूर हो गई हैं मेरी. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. And then the last recommendation from skincare category, it's actually lip care product. So this is a Laneige lip sleeping mask. I've used this a lot of times in my videos. I've recommended you guys this a lot of times in my videos, and I'm gonna recommend this to you one more time because मेरा प्यार ही इतना सच्चा है ना इससे कि मतलब इसके साथ मैं कोई दगाबाजी नहीं कर सकती हूँ. मैं इसको बहुत बहुत यूज करती हूँ. आई डू लव प्लम के कैंडी मेल्स लिप बाम, बट उनका वो लिप बाम वाला टेक्सचर ही होता है. बट अगर आपको इंटेंस हाइड्रेशन चाहिए ना अपने लिप्स के लिए, अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, दिस एक्ट्स लाइक अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट यू कैन से. आप काफी सारा इसको लगा लो थिक लेयर में एंड सो जाओ. सुबह उठ के इतने अच्छे प्लम्प एंड वेल हाइड्रेटेड लिप्स मिलते हैं ना. सो दिस इज तो वर्थ एवरी पेनी. 500 रुपीज का ये छुटकू सा टब आता है 8 ग्राम का, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हेयर केयर recommendations. I have 3 hair care products in total. The first one is the Nykaa Naturals Amla and Curry Leaves shampoo. Now this is such a good shampoo. I use this thrice if I'm not wrong, and this just works so beautifully. दोनों ही जो ingredients है ना इसके शैम्पू के बहुत ही अच्छे हैं. Amla is so good to boost the blood circulation on the scalp, as well as it helps to strengthen the hair follicles, and curry leaves actually help to prevent the hair fall. So अभी तो मौसम ऐसा है यार, कितना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर सकते हैं अपना हेयर फॉल, सो व्हाई नॉट. सो आप ये वाला Nykaa Naturals का डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो बिकॉज द इंग्रेडिएंट्स दैट द शैम्पू हैज आर सो गुड. एंड ये SLS एंड पैराबन फ्री शैम्पू है, सो नो नास्टी केमिकल्स. एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस वेरी अमेजिंग एंड nourishing hair mask that I've been using since a long time. It's from Plum. It's the olive and macadamia hair mask. It's a mega moisturizing hair mask, and I'll just show you कि almost मैं खत्म कर चुकी हूँ. I'm sure कि अभी दिख नहीं रहा होगा, बट ये ऑलमोस्ट लाइक नीचे रह गया है. एंड मुझको ये हेयर मास्क बहुत पसंद है, मेरी मॉम को बहुत पसंद है. सो लाइक द नेम सजेस्ट, इट्स अ मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क. तो काफी अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज करता है, नरिश रखता है, यू नो. सो मुझको ऐसे वेदर में स्पेशली ये यूज करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज बाल झाड़ू हो जाते हैं मॉनसून में, काफी ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं. नाउ द सीरम दैट आई हैव बीन यूजिंग इज फ्रॉम बायोलैश. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव यूज्ड माय L'Oreal's एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीरम, बट ये बायोलैश का मेरा सेकेंड बॉटल है. जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको परचेज किया था ना, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फ्रेग्रेंस, बट कीपिंग द फ्रेग्रेंस एस्पेक्ट असाइड, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट हेयर सिरम. एंड मैंने जब इसको यूज करना स्टार्ट करा ना, उसका फ्रेग्रेंस इग्नोर करके आई जस्ट फेल इन लव विद इट. एंड दिस इज माई सेकेंड बॉटल लाइक आई सेड. सो इट्स लाइक अ डीप स्मूथनिंग स्मूथ प्रूफ सिरम विद एवोकाडो. इट जस्ट स्मूथन्स एंड कंट्रोल्स द फ्रिजी हेयर. आई थिंक जो इस पे लिखा हुआ है ना 100% सच है ये, बिकॉज मानसून में बाल काफी फ्रिजी हो जाते हैं एंड इसको लगाते ही इतने अच्छे से टेम डाउन कर देता है सारे फ्लाई अवेज एंड फ्रिजीनेस. मुझको ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दिस इज थोड़ा सा बेटर दैन L'Oreal का एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीरम. मतलब दैट सीरम ऑल्सो हैज माई हार्ट, बट आई थिंक आई एम इन लव विद इट. एंड नाउ आई जस्ट हैव लाइक 2 बॉडी केयर recommendations. The first one is the Nykaa Wanderlust shower gel in the variant French lavender, and this is what the beautiful bottle looks like. Now first of all I really like the fragrance, although इसका जो fragrance है ना वो बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं टिकती है बॉडी पे, बट जितनी भी देर के लिए टिकती है ना, दिस इज जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस. इसका जो टेक्सचर है, इट्स लाइक अ वेरी रनी जेल सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर. नाउ यू जस्ट नीड इतू सा अमाउंट एंड इतने अच्छे से लाइक फोम अप हो जाता है ना. एंड नाउ वी हैव कम टू द लास्ट recommendation for this video. It's actually a mini pocket perfume by Nykaa. This is actually my very recent find you can say, and इसको मैंने just 1-2 बार ऐसे स्प्रिट्स करके देखा है to check the fragrance and the longevity, and I love it. I mean कहाँ था ये अब तक. So this is what the packaging looks like. It's called Yui De something. I don't know how to pronounce this. It's so refreshing. I can't even tell you. It's like थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा सा सिट्रसी एंड थोड़ा सा वुडी, लाइक एकदम ऐसा मिक्स्ड है सब कुछ. एंड समर्स के लिए आई थिंक दिस इज
so good because, like I said, overall it's a very refreshing fragrance. And if I talk about the longevity, I think it stays for good 3 to 4 hours on my body in this hot and humid weather. So I think that's a very good thing. And that's pretty much it for this video. I really hope you liked my recommendations for Nykaa's Hot Pink sale. In case you want to buy any products suggested in this Hot Pink trial room video, so I will leave the links of all the products in the description box below. I've also added a link to Nykaa's website. I feel it's the best time to shop because you're gonna get up to 50% off in this sale. Don't forget that Nykaa's Hot Pink sale is starting on the 22nd of July, and you can download Nykaa's app and use the coupon code FIRST300 to get a flat 300 rupees off on your first order above rupees 1000. If you found the video helpful, then please make sure you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I will be leaving all the links for you in the description box below as always. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.